इज द चैप्टर नंबर 5 हाउसिंग एंड क्लोथिंग। तो चलिए दोनों के अबाउट पढ़ेंगे। वी ऑल नीड ए होम टू लिव इन। हम सभी को एक घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स वी मेक। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के घर हैं जो हम बनाते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो मेक होम्स टू लिव। कुछ एनिमल्स भी अपने घर बनाते हैं अपने रहने के लिए। वी मेक होम्स फॉर सम एनिमल्स दैट वी कीप। हम भी कुछ घर बनाते हैं एनिमल्स के लिए जिसमें वो रह सकते हैं। Look at the following pictures. It shows homes of some animals including human beings. Write the names of each of the homes numbered in the picture. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये हाउसेज दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, किस किस के हाउसेज हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाउसेज। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइंड। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। हमें चोरों चक्कों से भी बचाता है घर, और हमें सर्दी गर्मी बरसात हवा से भी बचाता है। पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। द हाउसेज दे बिल्ड आर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हर कोई घर बनाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसको जैसी ज़रूरत होती है। ठीक है, पक्का हाउस। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। They are made of brick, cement, steel and iron. Pakka houses are also called permanent houses. They are mostly found in towns and cities. तो ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में आपको ये घर देखने को मिलेंगे। कच्चा हाउस। कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेज। दे डू नॉट लास्ट फॉर टू लॉन्ग। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक घर नहीं रहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, वुड, स्ट्रॉ, क्ले एंड बैम्बू। कच्चा हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। तो ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं? गाँव में मिलते हैं। Other temporary houses, some people keep moving from one place to another. The houses built by such people are called temporary houses. First है caravan. It is a mobile house. It can be moved easily from one place to another. तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर easily चला जा सकता है। Gypsies live in caravans. House boat. It is a wooden house made on a boat. ठीक है, ये wooden house होता है, एक बोट पर बनाया जाता है। ठीक है, it is floating house. इसे हम floating house के नाम से भी जान सकते हैं। House boats are found in lakes of Kashmir and Kerala. Next, a tent. It is a temporary house made of canvas or cloth. It is used by campers and soldiers. Next is special houses. Stilt house. It is a house built on long pieces of wood or metal. They are found in places where it rains very heavily. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है, वहाँ पर इस तरह से लकड़ी के घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं जिससे कि वो जल्दी से पानी में ना बहें। Stilt houses are made much above the ground. Igloo. It is a house built of snow. An igloo is found in very cold places. Eskimos live in igloos. तो एस्किमोज जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। ये बर्फ के घर होते हैं जो स्नो से बनाए जाते हैं। Houses with sloping roofs. People who live in hilly areas or where it rains a lot make houses with sloping roofs. The sloping roofs allow snow and water to slide off easily. A good house. A good house must let up plenty of sunshine and fresh air. A good house must have trees nearby. We must look after our house. We must keep it neat and clean. Empty out the waste paper basket every day. Do not throw things on the floor. Keep your toys and books in their place. Our clothes. Just as we need a house to live in, we need clothes to wear. तो जैसे हमें घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, ऐसे हमें कपड़ों की भी ज़रूरत होती है पहनने के लिए। ठीक है, we wear clothes to cover ourselves. क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? अपने आप को कवर करने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड द कोल्ड। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड द वाइंड। ठीक है, क्विक रिकॉल। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइंड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। हाउसेज मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड अ हाउस। ए गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. We wear clothes to protect our body from heat, cold, rain, dust and insects. We wear clothes according to the seasons and weather. Multiple choice question. Take the correct option. An example of a mobile house is caravan. An example of temporary house is tent. An igloo is built of snow. When we need to go out in the rain, we should take an umbrella or wear a raincoat. A material used to make a pakka houses is brick. A dash protect us from heat, cold, rain, thieves and wild. A house. Kacha houses are not very strong houses. Yes. So student, this chapter has finished. Hope you understood the chapter. Thank you.